Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So after completing the reading from the Glimpses of India, now we are going to start with a little bit summary from the part number 1, a baker from Goa. So here we do have a summary. Firstly, bread making in Goa. Yeah, this is a pen portrait of the traditional Goa village baker who is still remembered by Goa. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट एक पेन पोर्ट्रेट है ऑफ द ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु इज स्टिल रिमेम्बर्ड जो आज भी वहाँ के लोगों को याद है ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्तुगीज डेज जो ब्रेड मेकिंग की जो प्रोसेस है ना ये पुर्तगालियों के समय में शुरू हुई थी दे वर द लवर्स ऑफ ब्रेड वो जो लोग थे गोवा के रहने वाले जो लोग थे they are lovers of bread and bread making was an art which indeed perfection और ब्रेड मेकिंग एक कला है जिसको बनाने के लिए वी नीड वेरी मच परफेक्शन हमें परफेक्शन की ज़रूरत होती है ओके सो मिक्सिंग modeling and baking were the areas of specialization of making bread परफेक्शन स्पेशलाइजेशन होता है 4 एरियाज में like in mixing okay in these 3 areas we do need very much perfection and here we do have specialization like in mixing modeling modeling no molding mold and baking and bake karna so these are the special areas in that we need very much perfection and the loaves were baked in the text टाइम टेक्सटेड फर्नेसेस जो लॉव्स हैं यानी कि जो ब्रेड से बनती हैं रोटियां वो बेक की जाती हैं टाइम टेस्टेड फर्नेसेस भट्टियों पर and this profession has been continued by the bakers descendants और ये जो प्रोफेशन है ये उनके पूर्वजों के समय से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है so here we have to discuss about the time when author's childhood when author was young so the author's childhood days recalled जब वो अपने बीते दिनों को याद करता है द ऑथर रिमेम्बर्स हिज चाइल्डहुड डेज उसको आज आज भी वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है व्हेन द बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड जब बेकर जो थे वो उसके फ्रेंड हुआ करता था बेकर उसका फ्रेंड हुआ करता था कंपेनियन हुआ करता था और उसका गाइड हुआ करता था ही यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे वो एक दिन में 2 बार वहां विजिट करता था फॉर सेलिंग देयर ब्रेड once in the morning during his selling hours and then again while returning after selling all his bread once in the morning एक बार सुबह के समय his selling hours उसके बेचने का टाइम होता था and then again फिर दोबारा से again while returning after selling all his bread और दोबारा से कब जब वो पहले सुबह जब मॉर्निंग में आता था तो वो जब अपने सारे ब्रेड्स को बेच देता था तो जब वो रिटर्न वापस घर जाता था तो फिर दोबारा आता था वो सो द जिंगलिंग थंड ऑफ द बैम्बो जो आवाज़ थी उसकी थम 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 की बैम्बो उसकी बास्केट की जो उसने उठाई होती थी ही कैरिड woke them up in the morning and they ran to meet and greet him woke them up उनको उठा यहाँ पे बात ऑथर कर रहा है कि जब हम उसकी बैम्बो की जो उसने वो टोकरी उठाई होती थी जब हम उसकी आवाज़ को सुनते थे ना
तो आवाज से हम उठ जाते थे। एंड दे रेन टू मीट, और हम सब बहुत जो है जल्दी जल्दी भागते थे और उसको मिलने के लिए। दे रैन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स, वो भागते थे ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए, विच वर अ स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड, जो एक स्पेशली बना हुआ स्वीट ब्रेड है। लाइक वी कैन से दैट उनको लेने के लिए, उन बोल्स को लेने के लिए, उन बैंगल्स को लेने के लिए वो भागते थे। नाउ नेक्स्टली वी डू हैव डिलीवरिंग ऑफ फ्लॉवर्स। डिलीवर कैसे, उन तक पहुंचता कैसे था ये? एज द बेकर केम, जैसे बेकर आते थे, he would call out the lady of the house, he would call out, वो बुलाया करते थे घरों की, घर में लेडीज को, एंड विश हर गुड मॉर्निंग, और उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे। द चिल्ड्रन वुड बी पुश्ड असाइड, बच्चों को वो एक साइड पे हटा देते थे, एंड लॉव्स वुड बी डिलीवर टू द मेड सर्वेंट, और वो जो लॉव्स थे, जो ब्रेड्स थे, वो क्या करते थे, उनकी सर्वेंट्स को डिलीवर कर देते थे। एंड द ऑथर रिकॉल्स द अरोमा ऑफ लॉव्स दैट फिल्ड द एयर, वो कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो चीज़ें जो है वो याद हैं कि वो कैसे हवा से भरी हुई होती थी पैकेट्स। एंड द चिल्ड्रन वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ, और बच्चे इवन की टीथ ब्रश भी नहीं करते थे। एंड एट ब्रेड बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स को खा लेते थे विदाउट ब्रशिंग द टीथ, दैट मेड ऑफ ब्रेड विद टी, जो ब्रेड से बने बैंगल्स होते थे उनको खा लेते थे चाय के साथ ही बिना ब्रश किए। सो हेयर नेक्स्टली वी डू हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल ceremonies. Importance of bread. What is the importance of bread? The various kinds of bread were very important for all the occasions. सभी ओकेजन्स पे जो ब्रेड के काइंड्स थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड जो थे ना डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे इंपॉर्टेंट होते थे। नो मैरिज वॉज कंप्लीट until and unless the traditional bowl was served, कोई भी मैरिज was अनकम्प्लीट, कोई भी मैरिज जो है वो कंप्लीट नहीं होती थी until and unless the traditional bowl was served, जब तक ट्रेडिशनल बोल वहाँ पे सर्व नहीं होते थे। The lady of the house, so it means at the time of marriage they need to serve bowl made of from bread, and the lady of the house on the occasion of her daughter's engagement would prepare sandwiches and bollyhats, और जो लेडीज होती थी घर की, they need to be prepared, they need to be arranged sandwiches at the time of their daughter's engagement, and they have to prepare again bread and ballins would be prepared for Christmas event also, and other festivals too. So ball and ballin hearts, these are also the variety of bread. Okay. Now nextly, what are their attire? What actually they wear? The baker's dress. The baker was usually dressed in a kabai. Baker usually कपाई कबाई पहने हुए होते थे। एंड व्हाट वाज द कबाई? कबाई इज अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज ऑफ, और अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर, जो फुल लेंथ से तो छोटी थी और हाफ पैंट से बड़ी थी। वी कैन से दैट लाइक कैफ्री स्टाइल। सो इवन टुडे if anyone dares to go out in the streets wearing half pants, he is referred to as a pedder. आज भी अगर कोई हिम्मत करता है गलियों में जाके हाफ पैंट्स पहनने की, तो इट मीन्स वो पेडर है, वो बेकर है। नेक्स्ट, ब्रेड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। या ऑफ कोर्स द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, वो अपना बिल इकट्ठा किया करते थे मंथ के एंड में। ऑल द अकाउंट्स वर रिटन ऑन अ वॉल, सभी अकाउंट्स जो हैं वो वॉल पे लिखे हुए होते थे। इन द प्रेमिसेस विद अ पेंसिल, वॉल आंगन के दीवार पे पेंसिल से लिखे होते थे। इट वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ड्यूरिंग दोज डेज, उस टाइम पे ये बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बिकॉज पुर्तगीज वर लवर ऑफ फ्रेश बेक्ड लॉव्स, क्योंकि पुर्तगालियों का समय था और पुर्तगालियों का शासन था, तो वो लवर्स थे, वो बहुत शौकीन थे इनके। एंड द बेकर एंड हिज फैमिली
and his servant looked prosperous and happy. और सबसे समृद्ध परिवार लगता था उस टाइम बेकर्स का और उनके सर्वेंट्स का. I hope you will understand this. Okay, so here we do have some NCRT questions from the chapter. So, what are the elders in Goa nostalgic about? The elders in Goa were nostalgic about the good old Portuguese days, the Portuguese and their famous laws of bread. The elders in Goa were nostalgic about. Nostalgic means they are they are still remembered. They are very sweet memory from the past. So the sweet memory from the past is just about the good old Portuguese days when they all are the lovers of the bread and the time was very famous for the bread. Okay, so for that time, the elders in Goa nostalgic. Nextly, we do have question number two. Is bread making still popular in Goa? क्या ब्रेड मेकिंग की जो पॉलिसी है क्या आज भी वो उतनी फेमस है गोवा में? हाउ डू यू नो? यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा. वो आज भी उतनी ही पॉपुलर है. The author says that the mixers, the modelers, and those who bake the loaves are still present in Goa. Author कहता है कि जो मिक्सर्स हैं, जो मॉडलर्स हैं या जो बेकर्स हैं, वो आज भी गोवा में प्रेजेंट हैं. The old age time Texas furnaces still exist. बहुत पुराने लोग, बूढ़े लोग और पुरानी पुरानी भट्टियाँ आज भी वहाँ पर हैं. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo making his arrival in the morning could still be heard in some places. आज भी वो थम की ये जिंगल की आवाज़ जो बेकर्स की बैम्बो की बास्केट की उसके आने का संकेत देने के लिए होती थी, वो आज भी बहुत सारी जगह पर वो जो है आवाज़ सुनाई देती है. एंड इट इज़ अ फैमिली प्रोफेशन. ये एक फैमिली प्रोफेशन है विच इज़ कैरीड आउट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ये एक ऐसा फैमिली प्रोफेशन है जो पुर्तगीज के टाइम से स्टार्ट हुआ था और फिर उसके एंसेस्टर उनके एंसेस्टर्स उनके एंसेस्टर्स जो है उनको आगे आगे अपने अपने डिस्केंडेंट्स को प्रोवाइड करते जा रहे हैं. ठीक है. एंड दे आर having their same profession from generations to generations. Nextly, we do have question number three. What is the baker called? Yeah, the bakers are known as pedder in Goa. So here the padre is written wrong. So here we can write the bakers are known as pedder in Goa. Nextly, in question number four, when would the baker come every day? वो कब आया करता था? And why did the children run to meet him? और बच्चे क्यों भागते थे उनसे मिलने के लिए? The baker came twice. The bakers came twice every day. The bakers came twice every day. Once, दो बार आया करता था वो. Once when he set out in the morning on his selling round. जब एक बार वो अपने बेचने के राउंड पे सुबह मॉर्निंग में निकलता था. And then again when he returned after emptying his huge basket. और फिर दोबारा जब वो अपनी बास्केट को खाली करके चला जाता था घर तो वो दोबारा आता था बास्केट को लेकर. And the children ran to meet him not because of their love of the loaf. बच्चे उसके पास भागते थे उसे मिलने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लॉफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. विच वॉज ब्रॉड बाय द क्योंकि वो तो मेड सर्वेंट्स ले ही आती हैं. दे एक्चुअली लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बैंगल्स विच दे चूज केयरफुली. बहुत लंबे टाइम तक उसको देखते रहते थे ब्रेड बैंगल्स को कि वो केयरफुली चूज करें कि उनके कौन सा लेना है. एंड समटाइम्स इट वॉज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. और कभी कभी तो वो बहुत स्पेशल ब्रेड हुआ करते थे जो स्पेशली बनाए जाते थे. Okay, nextly in question number five, we do have the match of the following, which is a must in at what occasion. So here in the match form, we have to do the answers. Like as Mary's gift, they preferred sweet bread called ball, and for a party or a feast,
they need they preferred bread, and for a daughter's engagement they preferred sandwiches, and for Christmas they preferred cakes and balloners. Next, what did the bakers wear? Firstly, at the time of Portuguese, and then when what did they wear when the author was young? So in Portuguese days, the bakers had a peculiar dress known as kabai. पुर्तगीज के टाइम पे तो बेकर्स की एक बहुत ही अजीब सी ड्रेस हुआ करती थी जिसको कबाई के नाम से बोला जाता था एंड इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज और ये एक फ्रॉक होती थी जो नीज तक जो है वो पहुंचती थी when the author was young. Nextly, if the author was young, he saw the bakers wearing a shirt and trousers. और जब ऑथर छोटा था तो उसने देखा था कि जो बेकर्स है ना वो एक शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं एंड विच वर शॉर्टर द फुल मतलब लाइक ट्राउजर्स वी कैन से दैट ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा एंड वी कैन से दैट हाफ पैंट्स लाइक कैफरी स्टाइल they used to wear when the author was young, okay, with shirt. Nextly, in question number 7, we do have who invites the comment. He is dressed like a peddler and why? Anyone who wears a half pant. अब कोई भी गली में से निकल रहा है ना जिसने half pant पहनी हुई है, which reaches just below the knees, invites the comment. जो half pant पहने हुए होता था, जो which reaches जस्ट बिलो द नीज जो नीज से नीचे होती थी अगर कैफरी स्टाइल उसने पहना हुआ है तो उसको देखकर ये बोल दिया जाता था लाइक ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर सो दिस वाज सो बिकॉज द बेकर्स वर नोन एज पेडर ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेकर्स उनको पेडर बुलाया जाता था एंड दे वोर सच हाफ पेंट्स ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो बेकर्स ही थे जो इस तरह के ड्रेस पहनते थे तो अगर किसी को भी वो हाफ पेंट्स में देखते थे ना दे जस्ट कंसीडर लाइक दे आर पेडर. Okay. Nextly, in question number 8, where were the monthly accounts of the baker recorded? Where it was recorded? So anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment. Okay. So here the answer is misprinted. Where were the monthly accounts of the baker recorded? Yeah, the monthly accounts of the baker recorded on the wall because at that time they do not have the facility to write uh, to maintain the record in the notebooks so they usually write on the wall only. Okay, nextly we do have what does the jackfruit like appearance means. A jackfruit like appearance means a plum physics मतलब अच्छी खासी सेहत खाते पीते घर की जिसको हम बोलते हैं. So such a physic was linked to the bakers और ऐसी appearance सिर्फ bakers की हो सकती है because they never starved क्योंकि वो कभी भूखे नहीं मर सकते. Baking was a such a profitable profession क्योंकि baking का काम बहुत profitable था and the baker उसकी family उसके servants they look very happy and prosperous and had a jackfruit like appearance. बहुत खुश थे बहुत समृद्ध लगते थे and had a jackfruit like appearance. Jackfruit means we can say that strong. Okay. Nextly, we do have thinking about the text. Which of these statements are correct? So here we do have the statement. The peddler was an important person. Yeah, correct. Because उनके बिना तो कोई celebration कोई event ही नहीं होता था. Peddlers still exist. आज भी exist करते हैं. Correct. आज भी करते हैं. Nextly, what is the third statement? Like the Padders went away with the Portuguese. जो पैडर्स थे वो पुर्तगीज के साथ चले गए थे नो बट बल्कि पैडर्स तो आज भी हैं. In point 4 we do have the pedlars continue to wear a single piece long frock. वो आज भी वही पहनते हैं no now they are wearing shirts with the trouser like capri style. Okay. Nextly, in point 5, we do have bread and cakes were an integral part of the Lagoa's life in old days. Yeah. Bread and cakes are still. वो मतलब थे नहीं वो आज भी हैं. Okay, so that's why it is incorrect. Traditional bread make baking is still a very profitable business.
Yes, this is correct. Like traditional bread making is still a very profitable business. Last point number seven. Peddlers and their families starve in the present time. Yes, correct. Nextly, in question number two. Is bread an important part of Goan life? How do you know this? Yes, bread is an important part of Goan life because as marriage gifts are meaningless without the sweet bread bowl. For a party, bread is must, while the Christmas cakes are must. Sandwiches must be prepared by the lady of the house on the daughter's engagement. So the author says that everybody loves two friends of loves. सभी को वो भटियां जो है वो बहुत पसंद है. And the elders were given loaves and their children were given bread bangles. वो कह रहा है कि elders को loaves दिए जाते थे और बच्चों को bread bangles बना के दिए जाते थे and which they longed for जिनकी उन्हें इच्छा होती थी. Also the fact that bakery is a profitable profession. और ये भी सबसे बड़ा सच है कि जो बेकिंग का काम है ना दैट वाज सच अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सच अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन शोज दैट द लव फॉर ब्रेड इज इनॉर्मस इन गोवा कि आज भी ब्रेड को लेके जो प्यार है ना वो गोवा में आज भी लोगों के अंदर है. नेक्स्टली वी डू हैव द क्वेश्चन नंबर थ्री. टिक द राइट आंसर एंड व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग. So the third and the jingle of the traditional baker's bamboo can still be heard in some places. आवाज जो है बेकिंग की बैम्बो की वो आज भी सुनाई देती है तो दैट इज नॉस्टैल्जिक टोन. Maybe the father is not alive but the son still cares on the family profession. But father शायद हो सकता है कि जीवित ना हो लेकिन प्रोफेशन को चलाए रखा है from as their descendant. So that is we can say that hopeful also. Yeah, hopeful है we are कि उन्होंने चलाया होगा. And nostalgic also it can be. Nostalgic भी हो सकता है. And third, I still recall the typical. अब ये तो recall हो गया, so that's why it is nostalgic. The tiger never brushed the teeth. That is funny. Yeah. Cakes and bolliners are a must for Christmas. That is matter of fact. And the baker and his family never starved. They looked very happy and prosper. That is also a matter of fact. Okay. So I hope you will understand this part. In next video, we will continue with the next part. Thank you. Have a nice day.